हाँ, अब सही है दोस्तों. Well, what's happening? It's Saturday. I'm back on the live stream called Coffee and Cricket with Jamie. कॉफी का पहला पहला सिप दिन का once again. आज जल्दी स्टार्ट किया मैंने आज. रात को नहीं जागा मैं इतना लंबा. What's happening? Shikhar Singh, what a guy. Shikhar Singh is back. Brilliant knock by Gill. Gill, fantastic, yeah, to see Shubman Gill come back after a tough time in the West Indies. वो पाकिस्तान मैच जो पहला मैच था 32 गेंदे खेल के 10 रन बनाए. I just met Shubman Gill a week before the Asia Cup, before he went to that camp in Alur. वो काफी कॉन्फिडेंट थे शुभमन गिल. मैं बम्बई गया था उनसे मिलने इंटरव्यू के लिए, which will be out next month for GQ magazine. He looked confident. He said, I know that I'm struggling, but I want to put the team first. It's a cliched line, but मैंने कहा नहीं, but can you elaborate? तो शुभमन ने कहा, देखो टीम चाहती है कि हम अग्रेसिव खेलें, टीम चाहती है कि हम बॉल वन से मारे, चाहे वनडे हो चाहे चाहे T20 हो. और उस चक्कर में कभी कभी मैं खुद से आगे निकल जाता हूँ और मैं आउट हो जाता हूँ. तो 2-3 बार आप फेल होते हो तो आपको दुख तो होता है, बट द टीम इज सेइंग डू इट. आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज uh, on my skill, on my desire. I'll do it for the team. तो अच्छा लगा कि उस पाकिस्तान मैच के बाद he got a 50 against Nepal, which then translated into a match setting 50 against Pakistan. Look decent against Sri Lanka before he got that lovely ball. और फिर कल यार जहां सारे बैट्समैन फेल हुए, रोहित गोल्डन डक या डक पे आउट हुए, वहां शुभमन गिल ने 100 लगाया. अक्षर गुड फॉर हिम, hung around, but you shouldn't be losing to Bangladesh. but मेरा ये पॉइंट है कि फाइनल से पहले ये झटका अच्छा है. मानता हूं टीम नहीं हारना चाहती थी, लेकिन जब आप 5 चेंजेस करते हो तो जाहिर सी बात है कि आपकी फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं होगी जब आपके फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स नहीं है. 5 प्लेयर्स, तिलक वर्मा डेब्यू, सूर्य कुमार यादव अगेन स्ट्रगलिंग. दिस वाज इंडियाज बी टीम, सो यस, इट वाज नॉट द बेस्ट टीम. और मैं इस हार से बिल्कुल निराश नहीं हूं. ये अच्छा झटका है. टीम वापस पूरी जो हमारी बेस्ट 11 है वो वापस आएगी फाइनल के लिए. आई एम सेइंग इट्स नॉट अ बैड लॉस. लेट्स लुक बियॉन्ड इट. चैतन्य हेलो. समझ नहीं आता कोहली को क्यों बिठाते हैं. Yeah, I said it yesterday. I said I would not be surprised if Virat Kohli were rested, but I would understand. I thought resting him for those 1 days in the West Indies was stranger. यहाँ पे उनको खिलाना चाहिए था, but again he scored back to back. He played back to back 3 days. Maybe he was tired. जो भी है, टीम ने डिसीजन लिया था. Regardless of the scheduling and rain, how do you rate this Asia Cup? What were the biggest positives for Team India? I don't have a lot of time for the Asia Cup. I think it's not an important trophy in the bigger scheme of things. लेकिन जब इंडियन टीम के पास 5 साल तक कोई भी ट्रॉफी नहीं है, उस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया फैंस के लिए, आप लोग के लिए कुछ कुछ ट्रॉफी जीत के लाए. The biggest positives are Bumrah coming back, staying fit, bowling intense. KL Rahul, a big positive. We didn't know how fit he was not supposed to play the match against Pakistan, the second match. Got a chance literally minutes before the toss when Shreyas Iyer pulled out, scored the finest of his 6 one-day hundreds, kept very well. His keeping is much better than what I recall it being earlier. That's a massive plus. Shubman Gill, मैंने शुभमन गिल के बारे में अब बात किया. शुभमन गिल, to my mind, I said it at the start of the year, January के पहले हफ्ते में मैंने एक वीडियो बनाया था इस चैनल पे कि ये साल बहुत बड़ा है शुभमन गिल के लिए. मैंने कहा था कि आई थिंक अगर फॉर्म और फिटनेस ने इनका साथ दिया तो ये इस वर्ल्ड कप के सबसे सफल बल्लेबाज होंगे. उस लिहाज से struggling in the last couple months in the West Indies, struggling in the WTC final. Big positive that he's come back. Beyond that, I mean, I think things are expected. Ishan Kishan started off very well, but for me, if you want the positives, it's Shubman Gill coming back to very good form. KL Rahul coming back with an outstanding innings, backed up by a fine 39, and Bumrah being fit. बाकी तो कुछ खास नहीं है. Jadeja's batting totally disgusting. Again, KL comes his original form. Jadeja's batting हमें ये सब मानना पड़ेगा. पिछले कुछ सालों में जडेजा की वनडे बैटिंग, T20 बैटिंग वो नहीं है जो हम सब चाहते हैं. He's brilliant in test matches, but he's become rather average. And I think इस वर्ल्ड कप के बाद जैसे कि सिलेक्टर्स को रोहित शर्मा को लेकर कुछ डिस्कशंस लेने पड़ेंगे, कुछ कॉल्स लेने पड़ेंगे, उसी कैटेगरी में मेरे लिए रविंद्र जडेजा जरूर आएंगे. KL comes his original form. I don't know what you mean by original form. Dhruvesh saying some match loss is good for team. बिल्कुल. देखो टीम जब बुमराह, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, जब कुलदीप यादव को क्यों रेस्ट किया?
ये मुझे समझ नहीं आया। लेकिन जब आपने 5 मेन प्लेयर रेस्ट किए, तो ज़ाहिर-सी बात है टीम थोड़ी वीक होगी एंड फुल मार्क्स टू बांग्लादेश फॉर बीटिंग देम। Yes, Ashutosh, Jadeja's batting has been a concern for a long time. There was no case for Tilak. Yesterday, बहुत लोगों ने कहा था कि तिलक को खेलना चाहिए. I was not in favor of it. There's nothing to be gained. लेकिन अब मुझे फिक्र है, अब मुझे डर है कि श्रेयस अय्यर शायद फिट नहीं होंगे वर्ल्ड कप के लिए. Because there was no reason to play Tilak Verma unless Shreyas Iyer is in doubt. This could be a big, big jhatka for India. But we all know कि बीसीसीआई और टीम से कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा. Sky playing. I said Sky should play just to see where he's grown. Unfortunately, he didn't impress me. He kept sweeping. He kept missing. Two LBW shots went missing. Two appeals. Sky. I'll say it again now. Sky को जितनी लंबी रस्सी मिली है अपनी T20 बैटिंग पे, I'm not in favor of it. बहुत लोग कहते हैं कि आप स्काई के खिलाफ क्यों हो. मैं स्काई के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि और टैलेंटेड और डिजर्विंग और आंकड़ों के बेसिस पर और सक्सेसफुल बैट्समैन को आपने बाहर रखा है. सूर्य कुमार यादव को इस उम्मीद से कि एक दिन वो चलेंगे. अगर वो 27 वनडे में अब तक एक बार नहीं चले, तो आप क्यों उम्मीद रख रहे हो. स्काई पहली बॉल पे स्वीप मार रहे हैं, एक बार चलता है. टू मी ही लुक्ड वेरी वेरी पुअर yesterday. If Akshar improves his bowling versus Australia, he should replace Jadeja. I would love to see Ashutosh, but Akshar gives you the same skill as Jadeja. दोनों को क्यों स्क्वाड में रखा है? The more I think about it, it seems a strange decision. शार्दुल इज गुड. शार्दुल ठाकुर पिछले 4 साल में इंडिया के सबसे सफल वनडे बॉलर हैं. 57, 58 wickets in the last 4 years. He's never going to run through sides. 3 for 50, 3 for 55. That's going to be a good day. मुझे प्रॉब्लम है कि शार्दुल ठाकुर अपने बैटिंग को सही तरीके से नहीं ले रहे. वो सीरियसली नहीं ले रहे क्योंकि वो ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं. यू कैन नॉट हैव शार्दुल ठाकुर बैटिंग सो पोरली दीज डेज. अश्विन सिंह सूर्या रोहित के फेवरेट है इसलिए चुना गया टीम में, लगता है. अदरवाइज सूर्य ने अब तक ओडीआई में कुछ खास नहीं किया भाई. 27 मैच के बाद इनका एवरेज 25 से कम है. कुछ नहीं किया है. Once he was dropped from CSK captainship, he's not the same. Uh, who are we talking about? CSK captainship? Rohita, just remind me who you're talking about. Kudos to Sky. Pitch पे अच्छी झाड़ू लगाई. बिल्कुल अच्छी झाड़ू लगाई. Between Shreyas and Sky and India. Oh, that's not even a question. Shreyas Iyer has been India's. I don't know यार, आप लोग स्टैट्स पे सर नजर नहीं डालते हो. सबको पता है कि सूर्य कुमार यादव is nowhere near this class. Sanju Samson averages twice as much. Sanju Samson averages 55 from 13 one days. Surya Kumar Yadav averages 24.7 from 27. So double the matches, half the average. And I don't know how, my friend Dhaval, you can put Shreyas and Sky in the same category. Shreyas Iyer is the most successful number 4, not just for India, but in all ODIs in the last 2 years. He's such a brilliant player of spin. He's improved his short ball problems. Shreyas Iyer and KL Rahul, they walk back into India's 11. And Surya Kumar Yadav right now doesn't even deserve to be carrying drinks for India. So sorry for the kadvi baat, but Sky is a disaster in one days. Crick Maniac is back. If Akshan can bowl a bit slower, he'd be much more effective. But he's already very slow. He bats very well. I get him. Jadeja's career graph has been going down. I think after the World Cup, selectors are going to have to take a long look at him. He's not been firing. Hats off to him for getting 200 wickets. ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. लेकिन जडेजा की बैटिंग पिछले 2-2.5 साल में व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडिया के लिए कुछ खास नहीं है. सो इट्स ही इज इन अ टफ स्पॉट एंड अक्षर विल कीप पुशिंग हिम. वॉशिंगटन सुंदर होते तो बहुत दिक्कत होती. केएल को फिर से टेस्ट मैच की तरह बैटिंग करने लगा है. नहीं नहीं, लुक, आई एम नॉट गोइंग टू बी हार्श ऑन हिम. जिस मैच में कोई नहीं चला, he had to sort of hang around. So I'm not going to be harsh on him. He helped India win a match with that 100 when he came back, and then he got that fine 39. So I'm gonna cut him some slack. Iyer is not playing because he's not fit, and I don't think he's going to be fit for the World Cup. Sack Rahul Dravid. आपको बता दूं, Rahul Dravid has already been told long ago, 1 month ago, कि World Cup के बाद सर आपका contract renew नहीं हो रहा है. ये हकीकत है. Salam from Pakistan. Cricket is beyond borders. Do you have any friend journalists from Pakistan? I have many. Usman Samidin is a very good friend. बहुत है. Please collaboration कर दो भाईजान. देखते हैं, मैं कल शाम को ही मैं बाजिद खान
सर से बात कर रहा था. I'm trying to get him on my channel. बाकी बहुत है यार मेरे पाकिस्तान जर्नलिस्ट फ्रेंड्स. पहली बार मैं 2016 में उनसे मिला था. फिर जो 2015 और 19 के जो वर्ल्ड कप थे, काफी समय बिताया हमने वहां पे. बट Osman is very close because we worked together back in the 2000s when I was at Cricket Info. So thank you for commenting, my friend. Dhruvesh Patel, Gill made 6 centuries this year and Kohli made 5 this year. That's correct. जिमी अय्यर को फिट करवा दो भाई. मैं चाहता हूं कि वो फिट हो, लेकिन कल देखिए ना, सबसे सबसे हैरानी वाली बात है, आपको बता दूं कि अय्यर का एक बैक स्पैज्म हुआ था. टेक्निकली ये 36 आवर्स के अंदर, ये मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर ऐसे ऐसे फ्लेयरिंग अप ये ठीक हो जाते हैं. ये छठा दिन चल रहा है, ठीक है, छठा दिन. आज 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 छठा दिन चल रहा है. अगर 6 दिन के अंदर अय्यर अब तक पूरी तरीके से फिट नहीं है, और अय्यर अगर कल के मैच नहीं खेले, ये तो मुझे साफ मालूम है कि वो फाइनल तो नहीं खेल रहे. आई जस्ट विश द बीसीसीआई केम आउट एंड टोल्ड यू, टोल्ड मी, टोल्ड द मीडिया, टोल्ड एवरीवन कि भैया असलियत क्या है. हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे एक लाइन भेजना कि श्रेयस अय्यर इज प्रोग्रेसिंग वेल बट इज नॉट फिट फॉर द मैच. इससे हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता है, इससे हमें घंटा मालूम पड़ रहा है. साफ साफ बोल दो कि भाई अय्यर को ये हुआ है. वी थिंक इट विल टेक 4 days, 5 days, 6 days. अ बैक स्पैज्म, ये मैंने चेक किया है, अ बैक स्पैज्म शुड बी ओके विद इन 36 to 48 आवर्स. ये छठा दिन चल रहा है. अगर अब तक वो फिट नहीं हुए, और इसीलिए कल अगर हंच, इसीलिए टीम ने तिलक वर्मा को खिलाया, ये देखने के लिए कि अगर अय्यर फिट नहीं होते वर्ल्ड कप के लिए, इज तिलक गुड इनफ? आई डोंट नो. Shikhar, if Iyer ain't fit, just pick Tilak. Iyer, if Iyer is fit, declare Sky and fit and fit. Exactly. That's what I'm saying, my friend Shikhar. Jadeja, acha, Jadeja is not the same since he was dropped. I think he didn't drop. He himself said कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा. I don't think he's lost interest. He's obviously got something going on, which, frankly, we don't know what it is. Since they don't select Samson, correct. I don't know why they don't select Samson in 1 days instead of Sky Jaiswal. Yeah, but again, na, बिल्कुल जायसवाल इज गोना प्ले फॉर 15 years. लेकिन जायसवाल ना वो ओपनिंग करते हैं, तो एक एक नंबर 6 से ओपनिंग कंपेयर करने में आई डोंट थिंक वी शुड डू इट. जायसवाल विल कम इन पोस्ट द वर्ल्ड कप वंस दे टेक अ कॉल ऑन रोहित शर्मा. जायसवाल विल 100% replace Rohit Sharma, the opener, and then Jaiswal and Gill will open for 10 years, 12 years. Sky का problem क्या है कि Sky, if he's playing a one-day match, he should only be batting at number 6. So I don't know. I think yes, Jaiswal is the future, and he might captain India, but he's not the person to bring in when you're dropping Sky. You bring him in when you drop Rohit Sharma after the World Cup. Bangladesh is also missing at least 4 players from their first 11. Yesterday showed we've got to think about a death bowling in which Shami isn't reliable and Bumrah. I've been saying it. Mohammad Shami is not a very good one-day bowler. He's had success, but that was 7 years ago. He's only playing because Bumrah and Prasad Krishna were out for 11 months. नहीं तो बुमराह नहीं तो शमी इस टीम के आसपास नहीं होते. 2020 से लेकर 2022 तक, यानी कि 2 साल तक, the selectors did not even look at Mohammad Shami. He's only going to play matches like yesterday and the Nepal match when Bumrah is rested. Of India's 9 league matches, they'll probably rest Bumrah for 2 of them. In those 2 matches, Mohammad Shami plays. Otherwise, I can't see Mohammad Shami getting a match. Will there be any changes? Well, yes, if Shreyas Iyer is not fit, then you're allowed to have 3 reserve players. Those 3 reserve players, to me, 2 of them look to be Prasad Krishna and Tilak Verma. Tilak Verma, because he played yesterday, and I know that Iyer is not going to be fit. If he was not fit for yesterday's match, he's 100% not playing tomorrow's final. If there are genuine concerns over Shreyas Iyer for the World Cup, then you have 3 one-days against Australia next week to sort it out. If there's serious doubts, then Tilak Verma comes in as the replacement batsman. South Africa has the best batting lineup coming into this World Cup, even if they might lose. Uh, Fair enough. I don't think they have the best batting lineup. I think the best batting lineup on paper remains England. But again, England have their problems against quality spin. England consistently putting up 400. South Africa do it once in a while. I mean, yesterday, Heinrich Klaassen, I saw him bat. Heinrich Klaassen was outstanding. David Miller was outstanding. But they're not consistent players. South Africa, they're never going to win a World Cup. I mean, let's face it.
So yes, they put up 400, but I think England do it consistently. Of the top scores in one day, the top three belong to England. They're World Cup winners. They're T20 World Cup winners. I think they're a much stronger batting team. साउथ अफ्रीका साल में एक दो बार कर सकती है हल्की टीम की अगेंस्ट, बट या साउथ अफ्रीका आई डोंट रैंक देम. कल तिलक का ऑडिशन था, लग रहा है ना, मैं वही कह रहा हूं, लग रहा है ये मैच फाइनल के लिए खतरे की घंटी नहीं है. आ, हो सकता है मेरे दोस्त, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये एक अच्छी हार थी, बिकॉज आपने बहुत रिस्क लिया पांच खिलाड़ी को रेस्ट करके, जिनमें से तीन तो मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए थे. बांग्लादेश भी वीकेंड टीम थी, लेकिन बांग्लादेश के सामने हारना ये एक वेकअप कॉल है. ये एक वेकअप कॉल है कि भैया आपने जो एक्सपेरिमेंट के नाम पे या रेस्ट और रोटेशन के नाम पे जो बदलाव किए वो आप पे भारी पड़ गए. ठीक है, सो यू लॉस्ट द मैच, but because you fielded a weaker team, I think it's a wake-up call. They're not going to make these mistakes against Australia. You're already in the final. You had nothing to lose. आपने कुछ हासिल भी तो नहीं किया शुभमन गिल के 100 के अलावा. But it's a झटका, but it's not big a झटका. Had it come, in the first match or second match, final तक पहुंच गया, ये आपको एक wake-up call था कि भैया आइंदा ऐसी गलती मत करना. So I'm okay with this loss. रोमिंग विद गैरी, इतने बड़े टूर्नामेंट में विराट कोहली को हर बार रेस्ट देना चाहिए, उसे वर्ल्ड कप से पहले गेम टाइम नहीं चाहिए. दैट्स व्हाट आई सेड यस्टरडे आल्सो. आई सेड आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि अगर विराट कोहली ये मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन जो तीन मैच के लिए उनको नहीं खिलाया गया वेस्ट इंडीज के वनडे में, आई थॉट कि वहां तक उसी सीरीज तक ये रेस्ट पॉलिसी विराट कोहली के लिए सीमित था. ही शुड हैव प्लेड यस्टरडेज मैच. यस, इंडिया इज बिकमिंग पुअर चेसिंग साइड इन ओडीआई, नाउ दे नीड. मैंने कल ये भी कहा था अपने शो पे कि अगर बांग्लादेश की बैटिंग पहले आती है और वो 260 265 बना ले, और देखिए कल स्कोर बिल्कुल 265 था. इंडिया नीड टू बी पुट अंडर प्रेशर चेसिंग. इट्स अ डेड रबर. इस मैच से ज्यादा कुछ हासिल नहीं करना था, पर आई सेड इट विल बी गुड इफ इंडिया पुट अंडर प्रेशर. वही हुआ. अफसोस की बात है कि कल टीम हार गई, बट वो काफी पुअर टीम थी. आई एंड तिलक वर्मा शॉट, माय गॉश, पता नहीं लड़का क्या सोच रहा. उस किस्म के वेरिएबल बाउंस पिच पे आप बॉल को ऑफ स्टंप पे लीव कर रहे हो, बहुत 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 बड़ी गलती. जी भाई, बैक स्पैज्म इज सच ए जोक. जब किसी को नहीं खिलाना होता तो उसको बैक स्पैज्म हो जाता है. या पर लुक, इस इस केस में इट्स नॉट अ जोक, बिकॉज श्रेयस अय्यर हैज ऑक्यूपाइड द बेस्ट पोजीशन इन द मिडिल ऑर्डर फॉर द लास्ट 2 years. जो इंतजार किया टीम ने, सिलेक्टर्स ने स्क्वाड डिले भी किया था ताकि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल, यानी कि उनसे सबसे बेस्ट, सबसे सफल 4 और 5, यू डोंट वेट दैट लॉन्ग एंड देन से ओ ही इज नॉट फिट. He's genuinely got some injury, and I think it's going to be very, very bad for the World Cup. It's okay to experiment on dead rubber match. No one is bothered. Yeah, I mean, no one probably is bothered except the fans. But India should have crossed the line and they were sloppy in the field. Healthy criticism is sometimes important. बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा. इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, इंडिया ने सीरियस नहीं लिया इस मैच को. नहीं लिया ना, तभी तो विराट कोहली को रेस्ट किया, तभी हार्दिक पांड्या को रेस्ट किया, तभी कुलदीप यादव को रेस्ट किया. कुलदीप यादव को क्यों रेस्ट किया? वो क्या फास्ट बॉलर है? वो क्या जान लगाते हैं अपनी बॉलिंग पे? फिसल तो कहीं भी सकते हो. कुलदीप यादव को बाहर रखना इस फॉर्म में, ये मुझे थोड़ा और लगा. 2 मैच में 9 विकेट ले गए. सो या बिल्कुल सही पूछ रहे हो आप, उन्होंने मैच को सीरियसली नहीं लिया. इंडियन बैट्समैन अगेंस्ट स्पिन इज अ कंसर्न. ओ भैया धवल, मैंने एक शो भी किया था. मैंने 2 मैच श्रीलंका जीत के बाद मैंने इसी टॉपिक पे मैंने शो किया था, और कुछ व्यूअर्स मेरे ऊपर चढ़ गए कि आपको क्रिकेट नहीं आता. आप एक ने तो ये कहा था कि आप वीडियो बनाना बंद कर दो, आपको कोई आपकी गेम रीडिंग ही नहीं है. किसने कहा था कि इंडिया का स्पिन गेम खराब है? मैंने कहा भैया दुनिया कह रही है, आप जैसे फैंस कह रहे हो, संजय मांजरेकर, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, वीवीएस लक्ष्मण, गौतम गंभीर, ये लोग कह रहे हैं, तो फिर मैं कौन हूं? Definitely, I've done shows on this. I'm not going to repeat myself. It's been a steady decline over the last 6-7 years, and since COVID, the last 3-4 years, the problems against spin have been so bad. मैं बहुत बार शो कर चुका हूं, मैं दोबारा इस चीज पे नहीं आऊंगा. Are you saying road for Sanju is over? ये मैं कह चुका हूं पहले. So संजू का रोड खत्म हो चुका है. In T20s, by his own fault. In one days, it's not his fault. I'll say it again. In 13 one-day matches, uh, Sanju Samson averages 55 at a strike rate of 104, with more 50s than Sky. That's 13 matches.
55 average. Suryakumar Yadav, 27 matches. That's double the matches, and he averages under 25. So that's less than half the average and more than half the matches. I think Sky, because KL Rahul has come back, he's keeping very well. He's scoring runs. Ishan Kishan has been scoring runs. Sanju ka ho gaya backup. No point of playing Ishan in middle as his mental makeup is not to rotate strike. Very valid point. Samson to replace Ayer. I would love to see it, but uh, not no, sorry, not Ayer. Ayer. Oh, you mean if Ayer is ruled out? I'd be very surprised. I feel very bad for Samson. I feel he's got a raw deal in 1 days. T20 eyes mein Samson is a colossal failure. Sanju Samson should never play T20s again, just like KL Rahul should never play T20s again. But in 1 day, Sanju Samson, like I said, in 13 matches, he has an average of 55 and he has what, 450s and a strike rate of 100. Log kehte hain ki nahi, he's a stat padder. He might be a stat padder, but if you weigh up Sanju Samson against Sky, Sanju Samson at least has some stats. Sky has no stats. So if Iyer is ruled out, I would assume his replacement would be Verma. Middle order is looking weak for India with poor form and injuries. So why can't Kohli bat at number four? Kohli could, but I wouldn't want to displace your most successful number three and put him at number four. ऊपर से number तीन पे कौन खिलाओगे? कोई है क्या? Like like uh, like my friend Chetan Narula said yesterday, unless unless a meteorite hits India, Virat Kohli is batting at number three all through the World Cup. Why did India choose bowling first? Because they wanted to put their team under pressure, their own team. Like I said, कल इंडिया को देखना था कि क्या हम चेस कर पाएंगे और कल जवाब मिल गया नहीं. Yesterday, Mumbai Indians lost to Bangladesh B side. जिस तरह से चल रहा है, I feel World Cup में भी डेड ओवर्स गेम में विराट को नहीं खिलाएंगे. I don't think in a World Cup they'd make that mistake. I don't think so. I'd be shocked. And if that's their approach now, फिर तो वर्ल्ड कप जाओ ही मत. होटल में देख के देखना या अपने अपने घर पे बैठ के देखना चाहिए इंडियन टीम को. Two new balls in ODI may be aggravating India spin bowling. The ball grips a lot. No, ऐसा कुछ नहीं है. It is too much T20 cricket. And I'm just repeating what the experts have said. It's too much T20 cricket. It's not enough quality domestic spinners coming up. It's not enough of our players going and playing domestic cricket. It's just too much T20 cricket. Test matches have come down. The art of grafting in 1 days is a rare skill. It's to my mind, it's just too much T20 player cricket. Just a question out of context. 2018 में अफगानिस्तान और आयरलैंड को टेस्ट दिया था. Which is next emerging team you see as a test team? It's a good question, yaar. Frankly, I don't see enough quality associate level teams doing well in first class cricket ना. स्कॉटलैंड का तो बहुत मुश्किल है. नेपाल का बहुत मुश्किल है. Frankly, I don't think it should be given to anyone for some time. वैसे ही टेस्ट का हाल काफी खराब है, but too many poor teams. फिलहाल रहने दीजिए. My answer is I don't see any next emerging team. It's coming soon, my friend. Dhruvesh, India done batting under light for the first time in this tour. बिल्कुल, because they wanted to see can we chase. और जवाब मिल गया आपको. Yes, Kamal, Bangladesh played well. They played well. They played well. Well, दोस्तों, like I said, very good to see कि शुभमन गिल का 100 आया. उनका एक फॉर्म जो वापस आया, उन्होंने एक्सटेंड किया उसको. जडेजा को 200 विकेट मिले, लेकिन उनकी बैटिंग बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक रह चुकी. अक्षर पटेल बैटेड वेल. Shardul Thakur got breakthroughs. Just to underline why I've been saying कि Shardul Thakur maximum matches खेलेंगे World Cup में. Rohit had a bad day, but overall, ठीक है, you lost by 8 runs. You shouldn't have lost. But when you don't take Bangladesh seriously, when you make 5 changes, when you rest Virat Kohli, when you rest Hardik Pandya, when you rest Kuldeep Yadav, इतना तो होता है भाई. तो ठीक है, मुझे कोई ज्यादा चिंता नहीं है इस लॉस से. अच्छा झटका है ये. दैट्स व्हाई आई सेड इट्स अ गुड लॉस. इट्स अ वेक अप कॉल कि भैया वर्ल्ड कप से पहले प्लीज 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 ये फालतू के एक्सपेरिमेंट्स ना करें. हर मैच को सीरियसली लो. हर मैच को एक नॉकआउट मैच की तरह लो. और हो सके आप वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स तक पहुंच जाए. मैं अभी भी ये उम्मीद रखता हूं. Worst case scenario, what if Bumrah gets injured when India reach semis? That is the worst case scenario, my friend, because Bumrah, to my mind, he and Virat Kohli are the two most important players for India. If either one gets injured, India's chances
greatly reduce. Although not in favor of rewarding T20I formats and ODIs, would you like to see a middle order batting well against Australia or Asian games drafted last minute? No, I think the only possible option to my mind, the best option to my mind, given the fact that you've given him chances over the last 1 year, would have been Sanju Samson. But I think Tilak Verma's got more faith. He's younger. He's a left-hander. He can bowl. So if Khuda na khasta Shreyas Iyer bahar ho gaye, to my mind, because Tilak Varma's in the Asia Cup squad, I think it's a massive indication that they played him yesterday, that he's going to be the player who replaces Iyer if Iyer gets ruled out. Yuji Chahal lost his place in ODI because he never practiced on his batting and spent time making reels. ये मैंने पहले भी ये कह चुका हूं मैं कि आपको एक टेल एंडर होके आपको बैटिंग पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. But I think a bigger factor is that either Rohit Sharma does not like him or he's never understood how best to use him because Chahal's career basically stopped once Rohit Sharma became the captain. So I think there's a story there perhaps we're not fully comprehending. स्लो मोड मिनिमम करिए. नहीं सर, मैं बहुत बार कह चुका हूं. मैं जब स्लो मोड ऑफ करता हूं, आप लोग इतने सारे सवाल पूछते हैं. कुछ कुछ व्यूअर्स एक सवाल पूछते हैं, तब तक कुछ व्यूअर्स 10 सवाल पूछते हैं. और जब मैं बाकी के बाकी क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाता हूं, तो लोग मुझसे कहते हैं कि सर आपने मेरा क्वेश्चन क्यों नहीं लिया, और वो गुस्से होके वो अनसब्सक्राइब करते हैं. तो इट्स गोना बी स्लो मोड. Sorry, just deal with it. Why Rohit depends so much on boundaries? Doesn't make runs by running between the wickets. That's his game. He's not getting younger. He's not as fit as he was a few years ago. He's trying to be more aggressive. Um, I think this question you've asked is a very good question. लेकिन मेरे हिसाब से this question best fits to Ishan Kishan. Ishan Kishan can look brilliant one day like he did against Pakistan, but he's looked really bad since then क्योंकि वो singles नहीं ले पाते हैं. वो spinners के against बहुत struggle करते हैं. वो running में काफी poor है. तो आई थिंक योर क्वेश्चन एक्चुअली अप्लाइज मोर टू ईशान किशन. आप इनकी कोई भी सक्सेसफुल पारी खो लीजिए जहां पे 70 80 100 रन हो. बाउंड्री काउंट ये होगा और सिंगल काउंट ये होगा. तो एक्चुअली द बिगर कंसर्न इज फॉर मी इज ईशान किशन. Which country do you think would be a good cricketing nation based on genetics? Based on genetics, oh gosh. Iran, yes. By that logic, America, with all its diverse genetics and the massive gene pool it has, I would say America should be the number one team. But yeah, मुझे कॉलेज के दिन याद है. हमने एक बार जो हमारी क्लब टीम थी कॉलेज में, मैं कप्तान था. हमने एक अमेरिकन बेसबॉल प्लेयर को लिया था. भाई, मैंने अपने बॉलर से कहा था कि भाई तुम इसको बस फुल टॉस दे दो. उस हट्टे कट्टे अमेरिकन बंदे ने सारे फुल टॉस को बाउंड्री पार किए, पर जैसे ही हमने उसको टप्पे पे डाला उससे बोल्ड हो गया वो. सो आई थिंक given the level of sports we see in North America, that should be the number one to my mind. So the last question, then I got to bounce, guys. The big difference between India and Pakistan is that India's C team will have decent players with enough quality to even challenge their A team. I think Hardik Pandya would be very, very happy to hear you say that, pro Pakistani. Pakistan does not even have a B team. Yeah, I often wonder like what kind of Pakistan team has been named for the Asian games. How many players in the Asian game squad have international experience? I need to go check that squad out. Plus our coach. Yeah, देखो पता नहीं यार, does the Pakistan team actually need a coach? I think वो अपने आप ही टीम को चला सकते हैं जितना मैंने देखा है टीम को. Your prediction for the final? Oh, bat. भैया bat. चलिए, last comment from सर्वज्ञ सोहम मिश्रा. सर्वज्ञ सोहम मिश्रा. Hope I'm saying it right. इंडिया को एक्सपेरिमेंट करना बंद कर देना क्रिकेट चाहिए. भाई, कब से कह रहा हूं मैं, पिछले दिसंबर से कह रहा हूं, जब टीम ने यही कांड बांग्लादेश में किया था. मैंने कहा भाई प्लीज एक्सपेरिमेंट्स मत करिए. 10 महीने 11 महीने बाद वर्ल्ड कप है, और उसी दिन रोहित ने कहा था बांग्लादेश में अभी हम वर्ल्ड कप के बारे में नहीं सोच रहे हैं ना. और हुआ क्या बबुआ, आप तो साला सीरीज हार गए बांग्लादेश से. This team has not taken itself seriously, but I still back them to do well in the World Cup. Have you got your World Cup tickets? भैया बहुत बार कह चुका हूं, हमें टिकट की जरूरत नहीं, हम मीडिया वाले हैं, हमें तो फ्री में मिलता है टिकट. I've already applied for my 11 matches. I was supposed to do 18 matches, but like I've said every single time this question is asked, because the BCCI took so long, I am not, because the cost went up
It's too expensive. Hotels are like 70,000 rupees. Yeah, flight tickets are 25, 28,000. So I've had to cancel for the last time. I'll say it. मैंने कल भी कहा था, मैंने परसों कहा था, मैंने लास्ट वीक भी कहा था, मैंने अपने कोलकाता मैच कवरेज हटा दिया, मैंने अहमदाबाद तो मैं जा नहीं सकता हूँ अभी मैं, और मैं कहाँ कहाँ लखनऊ और धर्मशाला, चार इंडिया के मैचेस मुझे कैंसिल करने पड़े आईसीसी के साथ because the tickets are just too expensive. So I'm doing Mumbai, I'm doing Bangalore, and I'm doing Delhi matches. So, anyways, gotta go. Thank you all. Have a great, great, great Saturday. कल मिलेंगे आपसे फाइनल से पहले एक लाइव प्रीव्यू के साथ. Take care. Goodbye. जय हिंद.